Hello everyone and welcome back to the commerce element. Again we are back with the channel past adjustments, this time part 2. Now today also the partners, the actors of the series will be doing so many blunders and we are here to rectify their blunders. Let's see what they are doing in first case. Avi, Diggy and Minnie are partners of the Royals with capitals of 5 lakh, 2.5 lakh and 2.5 lakh respectively. As per the deed, Minnie to get a salary of 5,000 per month. Avi entitled for commission of 80,000 per annum. Partners are entitled to interest on capital at the rate of 6% per annum and partners to share profits in their capitals ratio. Profit of rupees 3 lakh was distributed equally without providing the above adjustments. Now this time also they have done so many mistakes. Let's see what all mistakes. Minnie को salary नहीं दी, अवी को commission नहीं दिया, interest on capital भी consider नहीं करा. उनका P&L ratio था उनके capital के ratio में, but 3 लाख रुपीस प्रॉफिट उन लोगों ने equal distribute कर दिया, that too without considering all these adjustments. So गलत profit distribute हुआ, वो भी गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ. सो दैट इज अ रॉन्ग थिंग दैट हैव डन एंड सर्टेन थिंग्स दे हैव ओमिटेड. नाउ वी विल सॉर्ट आउट ऑल दीज एरर्स बाय मेकिंग वन सिंपल एडजस्टमेंट टेबल. अब आप बोलोगे ये तो गलत चीज़ है यार, मिस्टेक्स वो लोग करें, बैठ के रेक्टिफाई हम करें, दैट इज़ वेरी रॉन्ग. लेट मी टेल यू दिस इज नॉट रॉन्ग. वी आर बीइंग पेड टू रेक्टिफाई देयर एरर्स. We are being paid in terms of marks. So errors rectify करो, marks लेके जाओ. So अगर marks चाहिए तो फिर rectification तो करना पड़ेगा. So come, let's rectify. First we will make the table of adjusted profit. If we have 3 partners, we will be making 4 columns. And we will name the table as table showing adjusted profit. Avi, Diggy, Minnie and total for firm. Now as we discussed in the previous session also, there are 2 steps of rectification. First step में wrong को neutralize करो by giving the reverse effect. And second step में जो right effect देना था, जो omit हो गया उसको अब दे दो. So as of those 2 steps, first of all we will neutralize the wrong profit. So profit wrongly distributed. अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, 3 लाख प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया, गलत डिस्ट्रीब्यूट किया बिकॉज ये सारे एडजस्टमेंट्स ध्यान में नहीं लिए थे. गलत प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया. सो हम उसको न्यूट्रलाइज भी उसी रेशियो में करेंगे जिस रेशियो में उन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया. जब 3 लाख प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया होगा तो 3 लाख को उन्होंने उनके अकाउंट्स में क्रेडिट किया होगा, उसको रिवर्ट करेंगे हम. 3 लाख को डेबिट करेंगे इन 1:1:1. सो इक्वली 1 lakh we will debit in their accounts. So first part of error is rectified, wrong को हमने neutralize कर दिया. अब right क्या करना था, मिनी को सैलरी देनी थी 5,000 पर मंथ, नहीं दी, अब दो. So सैलरी अगर देते तो क्रेडिट करते 5,000 पर मंथ, 12 मंथ्स की 60,000. So 60,000 to मिनी, टोटल ऑफ 60. अभी को कमीशन देना था 80,000 पर एनम, नहीं दिया, अब दो. सो कमीशन अगर एंटर करते तो उसके अकाउंट में क्रेडिट करते, नहीं किया, अब करो 80,000 टू अभी. दे वोंट बी गेटिंग एनीथिंग, टोटल ऑफ 80,000 अगेन. एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम देना था जो ओमिट कर दिया, अब दे दो. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ
6% पर एनम अगर देते तो उनके अकाउंट्स को क्रेडिट करते, नहीं किया अब कर दो. देयर कैपिटल्स वर 5, 2.5 and 2.5 lakh. 5 lakhs 6%, 5 6 are 30, half of it 15 and 15, a total of 60,000. जो भी रॉन्ग था उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, जो 3 थिंग्स राइट थी नहीं की थी उसको अब कर दिया. अब वी विल टोटल्स कॉलम. हाउ वी विल टोटल्स कॉलम? by clubbing all debits and clubbing all credits together. We have this 3 lakh only as a debit figure and rest of them we have credit figures. So we will club all credits together and it will be 60, 60 and 80, a total of 2 lakh credits को club करके मिला. 3 lakh debit, 2 lakh credit, दोनों opposite balance है. So we will find the gap 1 lakh. 1 lakh कौन सी साइन कैरी करेगा? बिगर नंबर वाली साइन विच इज डेबिट. सो दिस 1 lakh इज डेबिट. नाउ जो भी उन लोगों ने गड़बड़ी करी उससे प्रॉफिट में 1 lakh का डिफरेंस आया. नाउ गड़बड़ी सॉर्ट आउट करने के बाद प्रॉफिट को हम एडजस्ट कर देंगे, एडजस्टेड प्रॉफिट. अब इन दिस सम एडजस्टेड प्रॉफिट जो अब राइट प्रॉफिट आया वो किस रेशियो में हम एडजस्ट करेंगे? It is decided in the deed that they will share P&L in their capitals ratio. Their capitals are 5, 2.5 and 2.5. So the ratio will be 2:1:1. So this adjusted profit will get adjusted in 2:1:1's ratio. हमको we know that this 1 lakhs column we are supposed to close. सो अगर टोटल का टोटल 1 लाख डेबिट बैलेंस से आया और अगर हमें ये 1 लाख से कॉलम क्लोज करना है तो दिस नीड्स टू बी क्रेडिटेड. सो 1 लाख क्रेडिट करेंगे इन 2:1:1 रेशियो. 1 lakh upon 4, 25,000. 25 into 2, it will be 50, 25 and 25. टोटल तो क्लोज हो गया. व्हाट अबाउट इंडिविजुअली पार्टनर्स? सेम फंडा से क्लोज करेंगे, क्लबिंग ऑल डेबिट्स टुगेदर, क्लबिंग ऑल क्रेडिट्स टुगेदर. वी हैव 1 lakh एज डेबिट बैलेंस, रेस्ट ऑल आर क्रेडिट. सो लेट्स सी यू आर नॉट सपोज टू शो दिस एज अ पार्ट ऑफ योर वर्किंग नोट. दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. आई एम शोइंग यू. आप ये रफ वर्क में कर सकते हो. इफ वी टॉक ऑफ अवी, he is having a debit of 1 lakh and all credits if we club together 80, 30 and 50. So 80 and 80, 160. If we talk of Biggie, he is having again 1 lakh as debit balance and 15 and 25 as his credit balance. So a total of 40 credit. Mini also having 1 lakh debit balance and 60, 15 and 25. 1 lakh as a credit balance. Now for all of them, one is debit, one is credit. So we will find the gap. Gap between 1 and 160 will be 60. 1 and 40 is gap, 60 again, 1 and 1. So mini is not having any issue. Now the 60 and 60's signs will be decided. How? Bigger number. Out of this two, 160 is a bigger number which carries credit balance. So this 60 will have credit balance. Out of this two, 1 is a bigger number which carries debit balance. So this 60 will carry debit balance. So let's place it over here. 60,000 credit, 60,000 debit. She is not having any issue. And like this, we are done with the calculation. Now we will simply pass the journal entry. I told you, even if it is one journal, make the format, then only pass. फॉर्मेट बनाने वाले बच्चे पेपर चेकर को अच्छे लगते हैं और अगर हम अच्छे लगे तो हमको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे. सो
adjustment entry. This time we will debit Diggy's capital and credit Avi's capital. The question is not giving any hint that their capitals are fixed, so adjustment will be done through capitals only. So the journal will be Diggy's capital account debit 60,000 to Avi's capital account 60,000. नरेशन आजीवन सेम रहेगा, बीइंग प्रॉफिट adjusted, and we are done. So I hope this is clear. Now let's see the next one. On 31st March 24, after the closure of books of accounts, the capitals of Paddy, Zubin and Sophia stood at 24, 20 and 12,000 respectively. The profit of the year 36,000 was distributed equally without providing for interest on capital at the rate of 5% per annum. The right profit sharing ratio was 2:2:1. Now here आप बोलोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पहले भी ओमिट कर दिया था, तो फिर इसमें नया क्या है? इसमें नया ये है कि देयर कैपिटल्स बैलेंसेस आर गिवन आफ्टर द क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स. एक्चुअली हम जब भी कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, वी कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल. बिकॉज बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होने के बाद कैपिटल की बैलेंसेस दी है, तो फिर हमको क्लोजिंग कैपिटल की बैलेंसेस दी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर दिस एंट्री ऑफ ओमिटेड इंटरेस्ट हमको क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पे अराइव करना पड़ेगा. वो ओपनिंग कैपिटल पे 5% इंटरेस्ट देना था जो ओमिट हो गया. वो तो ओमिट हुआ ही हुआ, बट ओमिट करके जो प्रॉफिट आया था उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. नाउ लाइक दिस सेम प्रॉफिट गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, गलत प्रॉफिट गलत रेशियो. सो मेनी मिस्टेक्स अगेन. सो अगेन वी विल बी सॉल्विंग दिस मिस्टेक्स एंड रेक्टिफाइंग देयर एरर. रिमेंबर हम रेक्टिफाई कर रहे हैं, फ्री में नहीं कर रहे हैं, हमको मार्क्स मिल रहे हैं. सो डोंट गेट इरिटेटेड, लेट्स रेक्टिफाई. Now this time before making table of adjusted profit, we will first make the table to find the amounts of their opening capitals. So we will name it as table showing opening capital, and we have three partners: Paddy, Zubin and Sophia. ओपनिंग कैपिटल वाले में जितने पार्टनर्स है वी विल मेक दैट मेनी कॉलम्स ओनली. अब क्या करेंगे, हमको दिया क्या है, क्लोजिंग कैपिटल दिया है. वी विल स्टार्ट विद दैट. देयर क्लोजिंग कैपिटल्स आर 24, 20 and 12. सो वी विल राइट दैट 24, 20 and 12. हम जनरली ओपनिंग से क्लोजिंग में आते हैं. ओपनिंग से जब हम क्लोजिंग में आते हैं, हम ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट्स को ऐड करते हैं और ड्राइंग्स को डिडक्ट करते हैं, एंड वी अराइव एट क्लोजिंग कैपिटल. अब यहाँ पे ड्राइंग्स के बारे में कुछ नहीं बोला, बट खाली प्रॉफिट के बारे में बोला है. तो जब ओपनिंग से क्लोजिंग में आते हैं, ओपनिंग से व्हेन वी कम टू क्लोजिंग वी ऐड प्रॉफिट्स, और अगर ड्राइंग्स होते तो वी डिडक्ट ड्राइंग्स. अब हम उल्टा जा रहे हैं, हम क्लोजिंग से ओपनिंग में जा रहे हैं, बिकॉज हम रिवर्स जा रहे हैं. हम इसका भी रिवर्स करेंगे. अगर ड्राइंग्स होते तो उसको ऐड करते एंड प्रॉफिट्स को माइनस करते. सो लाइक दैट वी विल बी डिडक्टिंग प्रॉफिट्स. अब प्रॉफिट ऑफ 36,000 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया था. जिस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसी रेशियो में हम उसको रिवर्ट भी करेंगे. 36 इक्वली. सो 12, 12 and 12 we are supposed to subtract it, and we will have 12,000, 8,000,
सोफिया के तो बेचारे के पास बैलेंस ही नहीं है. So this is we arrived at 12 and 8 which are their opening capitals. इस पे इंटरेस्ट देना था जो omit हो गया है. So now we will do the regular table of adjusted profit. Table showing adjusted profit, हमारा regular वाला table. We have 3 partners, so we will be making 4 columns and name the table as table showing adjusted profit, and we have Paddy, Zubin and Sophia, and this is firm's totals column. Now we will do the regular thing, 2 steps of rectification. First में we will neutralize the wrong thing. Wrong क्या हुआ था? 36,000 profit equally distribute हो गया because interest on capital provide नहीं किया. This profit is wrongly distributed. हम उसको revert करेंगे. So profit wrongly distributed 1:1:1 equally हो गया था. उसको revert करने के लिए total of 36,000 को हम डेबिट करेंगे. 36 अपॉन 1 + 1 + 1, 36 अपॉन 3, 12, 12 एंड 12. रॉन्ग्स इफेक्ट न्यूट्रलाइज्ड. राइट क्या करना था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था एट द रेट ऑफ 5% पर एनम. नहीं दिया, अब दे दो. कौन से अमाउंट ऑफ कैपिटल पे? जो हमने टेबल बना के ओपनिंग कैपिटल्स फाइंड किए उस पे 5% इंटरेस्ट हैज बीन ओमिटेड. सो नाउ गिव इट. अगर देते तो क्रेडिट देते, नहीं किया अब कर दो. 12,000 5%, इट विल बी 600. 8,000 5%, इट विल बी 400. सोफिया का बेचारी का ओपनिंग कैपिटल था ही नहीं, सो उसको इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा. अ टोटल ऑफ 1000. Now we will totals column first. 36 डेबिट है and 1000 क्रेडिट है. टू opposite balances है, so we will find the gap. Gap is 35,000. 35 gap will carry which balance? Bigger amounts balance, which is debit. So this 35 will also be debit. अब 35 right profit है जिसको हम adjust करेंगे in their right ratio, which they say is 2:2:1. So adjusted profit 2:2:1 will get credited so that this 35's column get closed. 35 2 + 2 + 1 upon 5, it is 7. 7 into 2, Paddy को 14, 7 into 2 again 14 and 7 into 1 7. Now we will close individually the partners column, again clubbing debits and clubbing credits together. 12,000 डेबिट है and 14,600 क्रेडिट है. सो फॉर योर नॉलेज अगर हम पैडी का देखें 12,000 and 14,600. अगर हम जुबिन का देखें तो 12,000 and 14,400. सो 12 and 14,400. एंड अगर हम सोफिया का देखें तो 12 and 7. 12 is debit and 7 is credit. So if we find the gap, this will be 2,600, this will be 2,400 and this will be 5,000. These were debits and these were credit. Debit, credit. So this 2,600 will be carrying bigger amounts balance, that is that is credit balance. 2,400 credit balance and 5,000 bigger amounts debit balance. Like that we are done.
Always at the end when you are closing the partners column, you must note that their debits and credits must be equal. अगर equal नहीं है तो कहीं ना कहीं आपने calculation में mistake की है. And once you are done with the calculation, you will pass the rectifying entry. Sophia's capital account debit 5,000, to Paddy's capital 2.6, to Zubin's capital 2.4, and your narration जो आजीवन सेम रहेगा, being profit adjusted. I hope even this is clear to you. One छोटू सा topic रह जा रहा था. I thought to cover it in the same session. See, you may have sums with retrospective effect. Retrospective बोले तो मे बी आप रेट्रो थीम पार्टी में जाते होगे, मे बी आप रेट्रो कैफे में जाते होगे. सो रेट्रो मीन्स समथिंग विच इज़ वेरी ओल्ड, बहुत पुराने ज़माने का है, दैट इज़ रेट्रो. सो हियर अंटिल दीज मैनी सम्स पार्टनर्स कब मिस्टेक करते थे? खाली प्रीवियस ईयर में. नाउ हियर बिकॉज इट इज़ रेट्रोस्पेक्टिव, समथिंग वेरी पुराने ज़माने का, partners have done the mistake not only in just previous year but in previous few years together. और अब जाके उनकी previous years की mistake ध्यान में आई है. because mistake ध्यान में आई है, they are supposed to rectify it. So very simple sum. Let me tell you, this kind of sum was asked in current year's board's paper as well. So this is very simple to solve. See, Karan, Zubin and Sophia shared profits in 3:2:1 ratio. The profit of last 3 years were 140, 84 and 1,06,000 rupees respectively. The profits by mistake were shared equally for all these 3 years. 3 साल के 3 amount of profit actually they were supposed to share in this ratio. Anyways, by any mistake they have shared it equally, but now they have decided to correct the error by giving retrospective effect. अब उन्होंने डिसाइड किया पिछले 3 सालों में जो भी गलती हो गई है, 3 सालों की गलती को रेक्टिफाई करके we will make the adjustment. So what you are supposed to do is a total of 1, 2 and 3 years profits सेम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुए. किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुए? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए, बिकॉज उनको रेशियो फॉलो करना था 3:2:1. तीनों साल के इक्वली प्रॉफिट रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट हुए. सो वी नो दैट 2 स्टेप्स ऑफ रेक्टिफिकेशन, रॉन्ग को रिवर्ट करो एंड देन राइट इफेक्ट दो. सेम फंडा विल बी फॉलोड हियर ऑल्सो. As usual, we will be making table showing adjusted profit. We have 3 partners, so we will make 4 columns and name it as table showing adjusted profit. We have Karan, Zubin and Sophia, and we have total 140, 84 and 1,06,000. A total of 3,30,000 profit have been distributed equally over this 3 years. गलत डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, रिवर्ट करेंगे, हम उसको डेबिट करेंगे. सो प्रॉफिट्स रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, हम इक्वली उनको रिवर्ट करेंगे बाय डेबिटिंग इट. 3 इयर्स के टोटल प्रॉफिट्स करें तो इट वाज 330 अपॉन 1:1:1 अपॉन 3, इट विल बी 110. सो 110 एंड 110. हाफ अ पार्ट ऑफ एरर इज रेक्टिफाइड, हमने रॉन्ग को न्यूट्रलाइज कर दिया. सेकेंड पार्ट राइट क्या करना था? एक्चुअली दीज अमाउंट्स ऑफ प्रॉफिट्स वर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:1 रेशियो. अब कर दो. सो प्रॉफिट्स एडजस्टेड दिस टाइम इन 3:2:1 रेशियो.
Now this time this 330's totals column should get closed. 330 को डेबिट किया था, अब उसे क्लोज करने के लिए 330 को हम क्रेडिट करेंगे. 330 upon 3 plus 2 plus 1 upon 6. 330 upon 6, it will be 55. 55 into 3 into 2 into 1. So 55 into 1, it will be 55, it will be 110 and it will be 165. Now we will individually close the partners column. One is debit, one is credit. So we will find the gap. Gap between 110 and 165 is 55. Zubin, there is no gap. Uska account already settled hai. 110 and 55. The gap is again 55. Let's decide the balance. Out of this two, 165 is a bigger amount which carries credit sign. So this 55 will carry a credit sign. Out of this two, 110 is a bigger amount carrying debit sign. So ये 55 की debit balance होगी. And like that we are done with calculation. Now simply you will pass the journal entry. Sophia's capital account debit to Karan's capital account 55,000 being profit adjusted. Now in all these sessions I have tried to cover everything which you need to know for your first chapter of your accountancy, that is partnership fundamentals. इसके बाद भी अगर आपको कोई confusion है, कोई doubts है, कोई queries है, you can ping me in the comment section and I'll get back to you. For the next session, we will start with the second chapter, that is goodwill. If you have yet not subscribed the channel, do subscribe it and press the bell icon so that you remain updated for every session. Until the next session, stay tuned and goodbye.